So first of all, we define an essential upper bound. Essential upper bound. Essential upper bound. A number m, which is a positive number, is said to be an essential bound. Essential bound of f from x to r, provided that mod of f of x is less or equal to m almost everywhere. That's the definition of essential upper bound. Example. Define f from r to r by f of x equal to x if x is a rational number and it's equal to 1, or you can take 2, 3, any fixed number if x belongs to q complement. X is an irrational number. Then this is obviously less or equal to 1 on q complement, and the complement of q complement is q, and the measure of q is 0, so it's less or equal to 1 almost everywhere. So clearly mod of f of x is less or equal to 1 almost everywhere. So therefore 1 is the essential bound of f. So let's take one more example where we don't have essential bound of a function. So let's define this function. Say f from r to r. I can define identity function as well, or can define this by f of x is equal to 1 if x is a rational number, and it's equal to x if x is an irrational number. Then this function is not bounded almost everywhere. So because on q complement, it's equal to x, but the measure of q complement is not equal to 0, and it's unbounded on a set having measure not equal to 0, and outside of this set it's bounded, but that set is countable set. That set has measure 0. So you can say this then mod of fx is not less or equal to 1 almost everywhere. So therefore 1 is not the essential bound of f. In fact this function does not f does not possess any essential bound. वन तो है ही नहीं, बट आप कोई भी नंबर लीजिए वो इसका essential bound नहीं होगा. So that's an example. Now we define a function which we call the essentially bounded function. Essentially bounded function. Essentially bounded. A function f from x to r. A function f from x to r is essentially bounded. Is called essentially bounded. Is called essential. आपको ये समझ आ रहा है? Are you getting this definition? Yes? नहीं आ रहा समझ? आपको समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, आप बताते क्यों नहीं हो? ओके, पहले मुझे एग्जांपल से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. ओके, पहले मुझे इस डेफिनेशन को क्लियर करें, तो इसके बाद मैं फिर उसी एग्जांपल पर आ जाऊँ. ओके,
A function f from x to okay is called essentially bounded. Is called essentially bounded if it has an essential bound. जैसे फंक्शन कॉल्ड बाउंडर, अगर उसके पास बाउंड होगी, यहाँ पर एसेंशियल बाउंड, इफ इट हैज एन एसेंशियल बाउंड. ओके, सो मैंने ये एग्जांपल ली थी, पहली एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, पहली एग्जांपल जो मैंने डिफाइन की है, फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स if x is rational, if x is rational, and it's equal to 1 if x is an irrational number. I will take now here 2, not 1. I will take here 2, okay? But, let's take this. अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है. देन अगर मैं ये लिखूंगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है. दिस इज लेस आर इक्वल टू almost everywhere. This is less or equals to all. इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है? मतलब ये लेस और इक्वल टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर कब हम कहेंगे लेस और इक्वल टू ऑलमोस्ट? अगर सिर्फ ये उस सेट पर लेस और इक्वल टू नहीं होगा जिसका मेजर जीरो होगा, बाकी जो इसका कंप्लीमेंट होगा वहां पर ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए. अब देखिए ये सिर्फ उस सेट पर लेस इक्वल टू नहीं है जो क्यों है, सेट ऑफ रैशनल्स, क्योंकि वहां पर इसके वैल्यू 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना, तो वहां पर ही लेस इक्वल टू, मगर उसका जो कंप्लीमेंट है, लेट्स क्यू कंप्लीमेंट सेट ऑफ रैशनल्स, वहां पर इसका वैल्यू सिर्फ 2 है, सो इट्स लेस इक्वल टू. यू कैन आल्सो से इट्स लेस इक्वल टू 3. अब मैंने प्रिसाइज नंबर लिया है, आप लेस इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो या लेस इक्वल टू 5 लिख सकते हो, बट नॉट लेस इक्वल टू 1, लेस इक्वल टू 0, वैसा नहीं लिख सकते हो. But you can write less or equal to any number which is greater or equal to 2, and it's almost everywhere. क्योंकि इसका रीजन क्या है? What's the reason? Less almost everywhere, क्योंकि जहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है वो रैशनल्स का सेट है, और सेट ऑफ रैशनल्स जो है ये नल सेट है, इसका मेजर 0 है. जहां पर ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, जहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, वो सेट किन पॉइंट्स का सेट है? वो है रैशनल पॉइंट्स का सेट, और रैशनल पॉइंट्स का सेट, रैशनल पॉइंट्स का जो लिबेक मेजर है वो क्या है? वो 0 है. तो दैट सेट्स ए नल सेट. सो इट मीन्स दैट इट्स लेस और इक्वल टू 3 ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब ठीक है? ओके, सो तो मैंने यह एसेंशियली बाउंडेड फंक्शन डिफाइन की है. इसके बाद अब हम करेंगे एसेंशियल सुप्रीमम. ओके, वी विल डिफाइन एसेंशियल सुप्रीमम. जैसे सुप्रीमम होता है ना लीस्ट अपर बाउंड, वैसे ये होता है लीस्ट एसेंशियली अपर बाउंड, एसेंशियली बाउंड, लीस्ट ऑफ दोज नंबर्स, लीस्ट ऑफ दोज नंबर्स. So let's define essential supremum. Essential supremum. The essential supremum of a function f, the essential supremum of a function f from x to r is defined by ये इसकी नोटेशन है, norm of infinity. That's a notation of the essence. इसकी definition क्या है? It's equal. I will write here definition. ये definition है, equal to means ये definition है, ये notation है यहाँ से. It's equal to the infimum of all such m's which are essential upper bounds of the function f. Okay, such that mod of f of x is less or equal to m almost everywhere.
अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको तो मैं आगे जाऊंगा. It's the supremum infimum of all such numbers. जैसे ना आप सुप्रीमम डिफाइन करते हो, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन जैसे आप डिफाइन करते हो ना, जैसे किसी फंक्शन का बाउंड लेते हो, फिर उसके सारे बाउंड्स चेक करते हो, फिर इनमें से जो लीस्ट होगा दैट्स, उनमें से जो इन्फिमम होगा या लीस्ट होगा दैट्स कॉल्ड द इन्फिमम. ओके, और दैट्स कॉल्ड द सुप्रीमम, सॉरी लीस्ट जो होगा दैट्स कॉल्ड द सुप्रीमम. तो वही है सुप्रीम, एसेंशियल सुप्रीमम. इट्स कॉल्ड एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन है. तो ऑब्वियसली किसी सेट का एसेंशियल सुप्रीमम तो नहीं होगा, किसी फंक्शन का ही होगा, बिकॉज we are defining here almost everywhere property, so we define upper bounds or we define bounds almost everywhere, so then we have defined this essential supremum almost everywhere, so it has those properties, so it has a link with major theory actually. These are called essential bounds and essential supremum. So if f does not have essential supremum, if f does not have essential supremum, if f does not have essential supremum, then it's understood that the infimum of those numbers which are the essential bounds, it's equal to infinity. क्योंकि कोई बाउंड तो होगा ही नहीं ना, ये सेट कोई एसेंशियल बाउंड तो होगा ही नहीं उसका, उस केस में ये सेट होगा एम्प्टी सेट एक्चुअली, और एम्प्टी सेट का जो इन्फिमम होता है वो इन्फिनिटी होता है. तो ये भी एक रीज़न है व्हाई वी आर टेकिंग द इन्फिमम ऑफ एम्प्टी सेट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नॉट माइनस इन्फिनिटी. अब देखिए, अगर फंक्शन के पास एसेंशियल सुप्रीमम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसके पास एसेंशियल बाउंड्स नहीं होगी. तो अगर इसके पास एसेंशियल बाउंड्स नहीं होगी तो जिस सेट का आप सुप्रीमम इन्फिमम ले रहे हो ना, ये सेट जिसका आप इन्फिमम ले रहे हो ना एसेंशियल बाउंड्स का, तो ये सेट एक्चुअली एम्प्टी सेट है क्योंकि कोई एसेंशियल बाउंड है ही नहीं. तो अगर कोई एसेंशियल बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो एसेंशियल सुप्रीमम होगा वो इन्फिनिटी होगा. वो क्या होगा? इन्फिनिटी. तो इसमें भी आप यही एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पर मैंने बता दिया था कि ये जो फंक्शन है ये एसेंशियली बाउंडेड नहीं है. आप वही एग्जाम्पल ले सकते हो. आप दोनों एग्जाम्पल ले सकते हो. f of x इक्वल टू x if x is in Q and it's equal to 1 if x is in Q complement. So then you can see this essential supremum of this function is 1. अगर आप ये एग्जाम्पल लोगे, you should take this example. आप खुद बना सकते हो एग्जाम्पल्स. जैसे ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इट्स वेरी सिंपल. if x is in Q, then this function does not have essential bound, so its essential supremum is infinity. Okay, so this is it, essential supremum. Now let's define the norm on all functions. Let's define this collection L infinity. Okay, let's define this collection. जैसे आपने LP को define किया ना, Pth power integrum. Now we define the class L infinity. So define this class L infinity mu. Those functions from x to r. Obviously they are measurable. I think they should be measurable. So let me see first. Yes, f is measurable such that this f is measurable and essentially bounded and let's define
this norm infinity is equal to the infimum of m's such that mod of fx is less or equal to m almost everywhere. Okay, तो मैं ये डिफाइन करूंगा ना. we'll show that this function defines a norm on L infinity mu. वो आप खुद वेरीफाई करोगे those properties. Yes. So norm of infinity is equal to 0 if and only if its essential supremum is equal to 0, if and only if the infimum of m's such that f of x mod of fx less or equal to m is equal to 0. तो इसका essential bounds 0 एक्चुअली है. इस सेट का इन्फिमम 0 है तो ये तो नॉन नेगेटिव सेट है, इसका मतलब है इसका हर कोई पॉइंट 0 है. सो दिस इज ट्रू if and only if mod of f of x equal to 0 almost everywhere. This is true if and only if f equal to 0 almost everywhere. So that's understood. F equal to 0 almost everywhere means f is equal to 0. Okay, that's the first property, because we are living in the classes actually, that collection of equivalence classes induced by this relation, almost everywhere relation. So that's not important actually, that I have already explained. So f equal to 0 almost everywhere. Now next property is that okay, so and write property here, and this is always a non-negative number, for all belongs to L infinity mu. ये non-negative है, okay, because it is the infimum of non-negative numbers. M is a non-negative number. Okay, so a second property, that's not triangle inequality, that's the homogeneous property, that's this one. So let's take a scalar alpha in R and f in L infinity, and f belongs to L infinity mu. Then essential supremum of alpha f, it's equal to the infimum of m such that mod of alpha of f is less or equal to m almost everywhere. Okay, so you can see this it's equal to, हम mod alpha को बाहर, because it's independent of f actually, इसको m के साथ कुछ नहीं करना है. It's mod of alpha times, और ये नॉन नेगेटिव नंबर है जो हम बाहर निकालते हैं सेट से. सो इट विल नॉट चेंज दिस इन्फिमम टू सुप्रीमम. अगर ये नेगेटिव नंबर होता ना, उस केस में हम इसको चेंज कर सकते हैं, उस केस में इन्फिमम सुप्रीमम में जाता. बट इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर, सो इट विल नॉट चेंज इट्स इन्फिमम ऑफ m such that mod of f is less or equal to m almost everywhere, and that's equal to mod of alpha, and this one is the norm f infinity. So that's second property of norm. And the third property, let f comma g belongs to L infinity mu. Then we have norm f plus g infinity, which is by definition the infimum of m. आप ये नंबर को ही ले, लेट्स टेक दिस एज से g h, फिर आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इन्फिमम की. दिस इज mod of f of x plus g of x. Actually it should be f plus g of x, but that's equal to fx plus gx.
because addition is component wise here. Okay, and you can see this is less or equal to infimum of m such that mod of fx plus mod of gx less or equal to m almost everywhere. Okay, actually this set m such that mod of fx plus gx less or equal to m almost everywhere, this set is bigger than this set. Okay. Let me show this set, the infimum of m such that mod of x plus mod gx less or equal to m, this set is bigger than this set mod of fx plus gx less or equal to m. So if the set is bigger than this is not bigger, suppose we have m is here, means that, does it imply that this set is bigger? Okay, infimum of m such that mod of fx plus gx less or equal, this set is bigger, and this is the smaller. So bigger set possesses the smaller infimum. Okay, this set is bigger. Why it's bigger? Because if you choose any m here, then obviously that m satisfies the property mod of fx plus mod of gx less, without taking this supremum. Take only, now concentrate only on these sets, not infimum. Okay, so let's take this set. M is in this set. That means mod of fx plus mod of gx less or equal to m, and you have to show that m should be here. So for this you need to show that mod of fx plus gx should be less or equal to m. But what's mod of fx plus gx? Mod of fx plus gx is less or equal to mod fx plus mod gx, and mod fx plus mod gx is less or equal to m. So that means whenever mod of fx plus gx is less or equal to m, then mod of fx plus gx is less or equal to m. So that's why this set is bigger than this. So this infimum will obviously increase, because if the set will decrease, then infimum will increase. So this is it's less or equal to. Now we can separate them. Obviously it's actually exactly equal to. It's equal to infimum of m such that mod of fx less or equal to m plus you can take infimum of m such that mod of g of x less or equal to m, and that you can see it's equal to norm f infinity plus norm g infinity. So therefore L infinity mu, आप इसको वेरीफाई करना, इस इक्वलिटी को यहाँ पर. ओके, मैंने अलग अलग किया, ये इक्वलिटी को वेरीफाई करना. ओके, so therefore L infinity mu is a normal linear space. So then we have a theorem which states that L infinity mu is a Banach space. उसका प्रूफ आप खुद देखना, बहुत सिंपल है, बस 4-5 लाइन्स का प्रूफ है, वो आप देख लेना है. And what's the proof? What's the statement of the theorem? L infinity mu, क्योंकि नॉर्मल लीनियर स्पेस तो आपने किया प्रूव, अब आप प्रूव करोगे is a Banach space, So that's the end of this unit. आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई. इसका प्रूफ आप देखिए, इट्स ऑन HL Dryden, पेज नंबर 261, थर्म नंबर 31.9. Okay, see this HL Dryden. Okay, at page number, you can see it's very simple, it's not too hard. अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए. Any question if you have?